Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Moazzam Manzoor, and now I'm going to teach you another very important subsection of biology, that is islets of Langerhans. First of all, I would like to introduce you to the islets of Langerhans. Actually, they are the irregularly shaped patches of endocrine tissue located within the पेंक्रियाज. सो पेंक्रियाज हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में से एक मेजर ऑर्गन है. तो पेंक्रियाज के अंदर इरेगुलरली शेप्ड पैचेस एंडोक्राइन टिश्यू के प्रेजेंट हैं, उनको हम नाम देते हैं किसका? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का. और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह के सेल्स हमें मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट दी अल्फा सेल्स विच आर लेसर इन नंबर एंड दे प्रोड्यूस अ हार्मोन नेमली ग्लूकागॉन. And secondly, we have got the beta cells which are more in number and they produce another hormone which is named as the insulin. So ये two important facts हैं, high yield facts हैं for sake of your exam. कि बेसिकली जो अल्फा सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, वो प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकागॉन को, जबकि जो बीटा सेल्स हैं दे वुड प्रोड्यूस इंसुलिन. राइट. सो ये सीन हेयर कि ये हमारे पास से ये पेंक्रियाज है, दिस इज द पेंक्रियाज. तो इसके ऊपर इरेगुलरली शेप्ड जो पैचेस हैं वो प्रेजेंट हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में इन टर्न अल्फा सेल्स हैं प्रोड्यूसिंग ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स हैं विच आर प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन. एंड बीटा सेल्स आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू द अल्फा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. And now let's talk about the hormones of islets of Langerhans. We are going to construct a table of the